पीपीटी लगा ऐसा करके पीपीटी पे लिखना चाहिए। 2 पीपीटी है ना उसमें। रियल नंबर के कल 2 थे ना, 2 को ज्वाइन किया था। नीचे जा रहे एक हर्षल तेजे करके लड़का, उसको पकड़ के टुडे आई एम टीचिंग यू रियल नंबर्स। रियल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? नंबर का एडजेक्टिव क्या होता है? न्यूमेरिकल। तुमको किसी को फुल फॉर्म मालूम है क्या एनईपी का? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनसीईआरटी ने लाया ना, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स। न्यूमरेसी पे भी बात कर रहे हैं, लिटरेसी पे भी बात कर रहे हैं। न्यूमरेसी मतलब बच्चों को नंबर्स आना चाहिए, बच्चों को मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स में दोनों चीजें, अलजेब्रा भी है और वो आवाज नहीं जा रहा, देख जरा बच्चों लोग आवाज आ रहा क्या? आर यू एबल टू लिसन? हेलो, आर यू एबल टू हियर? Yes, sir. Then we were also yesterday we also talked about Euclid. यूक्लिड वो मैथमेटिशियन है जिसने ज्योमेट्री लाया। उसका एक फेवरेट इक्वेशन है f plus b equal to e plus 2. F stands for face, b stands for vertex, e stands for edge plus 2. किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर के लिए अप्लाइड है। f plus b is equal to e plus 2. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का बोलो। Highest common. कितने लोगों ने वर्कशीट दिया था? हमने नोट्स दिया था, क्वेश्चन पेपर दिया था, सॉल्व किया किसी ने? एलसीएम का क्या फॉर्मूला? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉपी किया? कल भी मैंने बताया कि एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सिग्नल चार में सिग्नल चार उसको दें। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सेकंड स्लाइड कैसे करेंगे? ये हमारे आगे क्लिक करने का चिकरा इधर मत बैठो तो वही तो वायरल आएगा मेरे पे, पहले बीमार है। दोनों को बैठने था मीटिंग में, यूं तो भाई चिल्ला रहे थे, बोलने का उसको मामा को दोनों भी आए बोले। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स में 2 है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स? एनीवन? Any number of the form p by q where q is not equal to 0. तो मेरा एक फेमस है चैट जीपीटी में, पाई इज पाई रैशनल और इरेशनल? इज पाई रैशनल और इरेशनल? देखा ऐसा इज पाई रैशनल और इरेशनल? बोलो Irrational. बच्चे लोग बताओ, पाई रैशनल है कि इरेशनल है? Rational. इरेशनल है। सही है? Yes, sir. 22/7 रैशनल। अरे पाई को अप्रोक्सीमेटली अपन 22/7 बोलते हैं ना। तो पाई इज विच नंबर? इरेशनल नंबर। Irrational. बराबर है क्या? लेकिन वो जो पाई का वैल्यू है ना, बोल पाई का वैल्यू क्या? 3.1415 और डैश डैश डैश। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना,
अरे हाँ या ना, तो इरेशनल नंबर है। क्लियर है सबके लिए? अरे क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो लिखो डैंड्रफ है। बोलो क्लियर है कि डैंड्रफ है? चैट बॉक्स में लिखो। ये किधर है सबके चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में लिखो क्लियर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कैसे दिखेगा उसको बोल। दूसरा टैब मैं सब दिखेगा ना, सब जाता हूँ। हाँ क्लियर है, लिखो क्लियर है। क्लियर है कि डैंड्रफ है? हाँ क्लियर है बोलो। भावना, मिर्जा फातिमा, अल्फा, फातिमा लिख रहे क्लियर है, लिखो क्लियर है। Yes, इसको sir. नहीं क्लियर है तो बोला डैंड्रफ है। Sir. जब ऑफिस जाओ याद रखो बच्चों लोग, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, पाई रैशनल है कि इरेशनल है? तो पाई ये इरेशनल है, लेकिन 22/7 ये रैशनल है। Rational. तो टर्मिनेटिंग होता है और रैशनल होता है। अभी 3/4 रैशनल है। अरे आया ना। Sir. Sir. अच्छा मुझे बताओ बच्चों लोग, अभी मेरा फेवरेट सट्टा, कितने लोगों को सट्टा समझता है? ये सट्टा जो है वो अनीस कुट्टी ने इन्वेंट किया है। सट्टा का फुल फॉर्म है एस फॉर शॉर्ट, ए फॉर एफोरिज्म, टी फॉर टिप्स, another T is for tricks, A stands for Anis. My name is Anis Kutti sir. तो सट्टास को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है। ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, और मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी अंडरस्टूड पैलिंड्रोम्स, समझा क्या? Sir. बोलो समझा बोलो, चमका बोलो, बोलो जिंटेक्स। Gente. Non per non io. Io non farei vedere né non so di tanto. म्यूट करो, म्यूट करो, सबको म्यूट करो। एफोरिज्म्स मतलब लिखना चाहिए। व्हाट आर एफोरिज्म्स एट एडीसी? APHORISMS SMS एडीसी। कल ये दो पीपीटी था, दोनों को कंबाइन किया ना उसने। बोलो बच्चे लोग रूट वन का वैल्यू बोलो। वो 9th वाला बच्चा किधर है जिसके लिए मैं क्लास दे रहा? कौशल को बोलो उसको ऊपर लाया नहीं। अरे उसको बोलो, उसको पेरेंट्स चिल्लाएंगे बाद में, मैंने नहीं पढ़ा। तो 9th का लड़का है कौशल लेके बैठा, कौशल को बोला चलो रूट वन का वैल्यू क्या है? सनी स्कूल रूट वन का वैल्यू क्या है? रूट वन 1 है, रूट 2 का वैल्यू है 1.414। रूट 3 का वैल्यू बोलो, रूट 4 का वैल्यू, रूट 5 का वैल्यू 2.2। रूट 6 का वैल्यू बोलो, इनसे ले लो ना। हेलो कौशल, बच्चे को लेके ऊपर आया, बोलो समझ नहीं। रूट 7 का वैल्यू तेरे बच्चे का next का बच्चा खाना है। बोलो, रूट 7 का वैल्यू। गर्ल्स बॉयज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 7? इधर आओ, बच्चा किधर है? रूट 7 का वैल्यू बोलो ना। अरे गेस करो ना, ये 2.0 है, 2.645. ये 2.2 है, 2.4 है, तो रूट 7 कितना आएगा? 2.6। 2.6. रूट 8 का वैल्यू 2.8। 2.8. रूट 9 का वैल्यू 3। रूट 10 का वैल्यू 3.162। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका नाम है, ये जो रूट 2 है ना, इसको मैं बोलता हूँ अमर। क्या बोलता हूँ? बोलो जोर से बोलो। और ये जो है ना तुम्हारा रूट 3 है ना,
इसको क्या बोलता बोलो ना, अकबर। और रूट 10 है ना, उसको बोलता एंथनी। माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूं। और यहाँ देखो, मैं बार बार बोलता, ये वैल्यूज को देखो, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यूज देखो, इसका डिफरेंस सेम है क्या नहीं? कितना डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस कितना टू था? का 0.2 का है ना? तो टू जीरो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट एपी टू में, है। अप्रोक्सीमेटली किसमें है? एपी। एपी मतलब क्या? आंध्र प्रदेश ना? फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कितने लोगों को पहली बार अरिथमेटिक मालूम पड़ा ये? प्रोग्रेशन। जिसको भी पहली बार मालूम पड़ा लिखो चैट बॉक्स में, ऐसा पहली बार हुआ है। मोबाइल खेलते, ऐसा पहले लिखो चैट बॉक्स में, लिखो ऐसा पहली बार हुआ है 13-14 सालों में। लिखा क्या कोई? बोलो बच्चे लोग, ऐसा पहली बार हुआ है। मामा को फोटो भेज दिया। अच्छा, अभी आया हुआ है। कॉपी किया बच्चों लोगों ने? यस सर। हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉप प्लॉट कर सकते हैं इसको। व्हाट इज नंबर लाइन बोलो? यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ क्या होता है? 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ये 1 और 1 इतना लिया ना, ये ट्राइंगल ड्रॉ किया ना ऐसा, तो ये √2 आता है। तो 1 और 2 के बीच में √2, ऐसा √2 यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन किधर बोलो? आया नहीं? टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं कौशल? हाँ, एक्सप्लेन कर, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वो कैमरा बंद कर। बता, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बता। इधर 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 9th। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है बेसिकली डेसिमल किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में लिखना, और जो कि क्या है, खत्म हो जाए। ठीक है ना? दो टाइप के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, बेसिकली खत्म हो जाना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/2, क्या लिखूं? 1/2। तो 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? कितना आया? 0.5। इसके आगे जाएगा क्या? नहीं जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होता है जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2i या फिर 5i, 2i या फिर 5i। समझ में आया क्या? अगर ऐसे पेयर में ही आना चाहिए, जैसे 8 आ सकता है। कम बताना, 1/3 आया। अगर 1/3 आए तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो 0.333 चलते जाएगा। अगर 1/15 आया ना तो भी नहीं होगा वो। समझ में आया ना? बस इनकी पावर में हो या फिर इन दोनों से मिला हुआ हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बेसिकली डेसिमल टर्मिनेट कैसे होता है ये ध्यान दो। 1/2 है ना ये, 1/2 है ना। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे कितना हो जाएगा? 5/10 हो गया ना। तो किसी भी डेसिमल को हमें टर्मिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? 2 और 5 रहेगा तो 10 आएगा। में आए ना? तो ऐसे ही ये 1/8 है। 1/8 को किया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0.1125। बट ये कैसे आया? अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? ये 2 का क्यू है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 का क्यू। तो मेरे को जितना 2 है उतना ही क्या चाहिए? 5 चाहिए। कितना चाहिए? जितना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 क्यू। यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 क्यू। तो ये कितना आ जाएगा? 125/1000।
तो अभी क्या है, नीचे से 1000 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0.125। समझ में आया क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? मतलब जो खत्म ही ना हो, बार बार पे क्या हो, रिपीट होता रहे। ठीक है ना? और क्विक टेस्ट का टू डिटरमाइन डेसिमल टाइप सिंपली विद द फ्रैक्शन चेक द डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा 2 और 5 होता है, बराबर ना? नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड कल बताया था और एक बार बता था, बोलो। कोई भी नंबर को हम ऐसा लिखते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं बोलो ना? डिवाइजर टू बोलो, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस क्या, रिमेन रिमाइंडर में गधे, रिमाइंडर। रिमाइंडर। इसको बोलते हैं द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। A is always equal to B into Q plus R। और याद रखो R का वैल्यू बिटवीन 0 एंड B। टोटल भी R का वैल्यू बोलो, जोर से बोलो। A स्टैंड फॉर, A को क्या बोलते हैं बोलो, जोर से बोलो, डिविडेंड। B को क्या बोलते हैं? डिवाइजर B को डिवाइजर। Q को क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। R को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। है ना? रिमाइंडर। ये डाल चैट जीपीटी में, यूक्लिड ये डाल, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एडेड इससे। ये कैसे यूज करते हैं? एचसीएफ, एचसीएफ कैलकुलेट करके यूज करते हैं। और ये जो लिखा जाता है ना भाई साहब, इसका नाम है एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? अरे 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 उनका पूरा काम। ये एल्गोरिथम बनाने वाला आदमी जो था ना, अल ख्वारिज़मी था। इसको गूगल कर, अल ख्वारिज़मी, इसने चालू किया। और ये अल ख्वारिज़मी ने, अल मैं क्यों ख्वारिज़मी का नंबर नाम था, उसने नाम दिया अल जबर। क्या नाम था? अल जबर से क्या बना बोलो? अल जबर। अल ख्वारिज़मी का मैथमेटिक्स डीडीसी है, डालना। एल्गोरिथम तो उसने ही बना। लिखा ऊपर का, लिखा टर्मिनेटिंग, ये लिखो डिविडेंड। डिवीजन करके एचसीएफ निकाला था ना, मालूम है ना? कैसे निकालते? डिवाइड करते जाओ जब तक कि, हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 252 को और 198 का एचसीएफ कैसे निकालेगा? दोनों मेथड से होता है। ये 252 को और क्या नाम है, 198 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इधर देखो, मैं कैसे निकालेगा? 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ये ऐड करके 9 आता ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा। अभी कुछ कॉमन है क्या भाई? है, ऑब्वियस 3 है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और क्या है क्या? मेरे भाइयों बहनों, इससे आता 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना है बोलो? एलसीएम क्या था बोलो? एलसीएम का दूसरा नाम जीसीडी है। एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 और बचेगा 14 और 11। इसको एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिवीजन लेमा मेथड से निकाल। कितने लोगों को समझा? समझा सर। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, क्या आएगा? परसों के दिन में उनको पकड़ा, क्लास में से पकड़ के 198 को कैसे, मारा भी। तो जो बड़ा नंबर होगा उससे क्या करना है, छोटे से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, ये कितना आएगा 198, सिखाना मैं जरा सकते हैं। 54, तो मेरे बाजू में बैठना, वो नहीं सिखा रहा तो मैं तेरे को सट्टे सिखा रहा, और चल को भी मैं सट्टे सिखा रहा। 3 टाइम्स कितना,
166 नहीं, नंबर डालो। हाँ 162 आएगा। कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और 3, अभी कितना आएगा? 54। तो अभी कितना एक टाइम जाएगा? 36 रिमाइंडर 18। कितना आएगा? 18 अंदर कितना बचेगा फिर? अंदर किसको लेंगे? 36 को। 18 टू जा 36 आया 0। जो लास्ट नंबर होगा हमारा, जो भी डिवाइजर बचता है वो क्या रहता बोलो ना, HCF क्या रहता वो? कितने लोगों को पहली बार समझा आइडिया? समझाली को समझा, जिनको समझाली को समझा, चमका। जिंटेक्स लिखो, जिंटेक्स। जा तू जाके ले, आजा फिर। छठे नहीं उठाए। बिजी आ रहा है। उसको ऐड करने के चक्कर कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा कुछ हो तो कंपोजिट नंबर आया ना। वन क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? दोनों में तो दोनों भी नहीं है। वन कुछ में नहीं। समझ में आया क्या? वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है ना? देखो अब बेसिकली क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या है प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे 360 के फैक्टर्स क्या होंगे? 360 के फैक्टर्स 2 2 2 कितना हो गया? 8 और इंटू 3 3 5, यही होंगे, यही होंगे ना? तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, उसको ज्वाइन किया 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसको 5 की पावर समझ में आएगी। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा अभी बताओ 480 को लिखो। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब लोग क्या नहीं कर रहा? यार है बच्चा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 5 इंटू फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे का लाइन भी लिख, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स। और एक ये भी लिख, यूनिक यूनिकनेस गारंटेड। ये लाइन देख, ये देख, इस ऊपर देख, यूनिकनेस गारंटेड। आया क्या? आंसर आया क्या? दूसरा क्या था? सब एक ही लाइन में। हाँ, क्या था उसके आगे सर? ये था, ये देख ऊपर, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स। कहा जा रहे हैं भाई साहब? 480 के फैक्टर्स, एजुकेशनल इकोसिस्टम। 40 15 1 2 3 4 5, 2:5, 3:1, 5:1, बराबर है क्या? 1080 का बोलो।
तक 2 से जाता तब तक 2 से करने का, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर बचा गया 5, 2 क्यूब 3 क्यूब और 5। अरे आता कि नहीं आता? 40 को है ना, 840 to 940 केमिस्ट्री होएगा, वानिश सर पढ़ाएंगे, लेकिन सीखने का क्या पढ़ा? एनडीए का क्या पढ़ाने को बोला देखो मैं? बायो। ये कौन है? ये विंटर का सही है स्वप्निल। सबने क्या ऐड करना है हम सबको फिर को एडमिन बनाने बोला। डिटेल्स बचना सबने के पास है। ऐड कर लेना, कुछ फर्क नहीं, जो भी है ऐड कर ले। ठीक है कैसे निकलेंगे बच्चे लोग 144 और 180 का एलसीएम? बोलो, मैंने क्या बोला, क्या करने का? मेरा मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाओ। 2 7 का 14, 2 9 का बराबर है, 2 3 का 6, 2 6 है ना, अभी 3 से जाएगा, 3 का क्या आएगा? 12, 50 जाएगा बराबर है। अब यहाँ क्यों रुकने का? कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या आएगा बच्चे लोग? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है क्या? 4 इंटू 9 कितना है? 36। एलसीएम क्या आएगा बोलो? 36 इंटू 4 इंटू 5, 720 आता ना? नहीं, सही है, सही है क्या? डिवीजन sir. मेथड से करेंगे क्वेश्चन सर। 180 को 144 से डिवाइड करो। समझ रहा क्या बच्चे लोग? Yes. सर एक बार वापस समझा। और एक बार समझो। देखो क्या करना है, 144 ये है ना, दोनों नंबर को एक साथ लिखना है। क्या करना है, दोनों नंबर को एक साथ लिखना है। 144 को यहाँ लिखा और 180 को लिखा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, प्राइम नंबर, उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया, कितना है यहाँ? 72, यहाँ आया 90, और 2 से किया, यहाँ पे कितना आया? 36, यहाँ किया 45। अभी ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है जिससे कि क्या है, दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर पता है क्या है? 3 है। तो इधर कितना आएगा? 12, और इधर 15। फिर दोबारा 3 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4, और यहाँ 5। बट अभी इसके बाद क्या है, ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो अभी जो भी ये आएगा, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा ये? 30. 36। तो एचसीएफ एलसीएम क्या हो जाएगा फिर? 36 इंटू 4 इंटू 5, कितना होगा? 720। ठीक है। देखो दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड क्या है? 180 को कहाँ लिखना है? 180 क्या होगा इसमें? 180 क्या होगा? डिविडेंड, डिविडेंड होगा कि नहीं? 144 क्या हो जाएगा? डिवाइजर। एक बार डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 144। रिमाइंडर कितना बचेगा? 30, इसका आ गया, ठीक है। अभी क्या है, 144 को अंदर लिखना, 36 को अभी क्या करना? डिवाइड करना, और 144 को डिवाइड करना कितने? 36 से। कितनी बार जाएगा? पक्का? ठीक है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना है? पूरा का पूरा चले जाएगा, इसके बाद नीचे कुछ नहीं बचेगा। 36 4 जा कितना होता है? ठीक है 36 टू जा 72 टू जा 144। समझ में आया क्या? तो ऐसे ही यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा हमारा? क्या बच रहा भाई लोग? 36 बचेगा। जो भी जो क्वेश्चन बचेगा बचेगा वो उसको क्या तो होगा? मिलेगा। अच्छा, इससे भी या फिर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, जीसीडी। ज्वाइन कर दिया। कितने लोगों को गोल्डन फॉर्मूला मालूम है? देखो चैट जीपीटी, गोल्डन फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मालूम है ना? अरे मालूम है क्या नहीं? Yes. यस सर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
वाईफाई नहीं चल रहा और ब्लैक का सीक्वेंस भी गया। HCF into LCM is equal to product of 2 number. डाला चैट जीपीटी में गोल्डन फॉर्मूला ऊपर देख इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तुम्हारा HCF into LCM का मल्टीप्लिकेशन है बराबर है कि नहीं मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारा LCM कितना है अरे HCF into LCM बोला ना यार गधे लोग 720 into 36 ना यहाँ बोलो कितना आता है सर मल्टीप्लाई करो 36 to 0 72 to 36 का स्क्वायर कितना है 1296 2 6 12 तो अपना पॉलिसी में जब 18 19 5920. कितना था सही है क्या Yes, sir. अभी वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोलो क्या नंबर था नहीं पढ़ना 4 in और 180. 144 और 1441. और 180 इनको मल्टीप्लाई करके देखो वो चाह रहा है क्या हाँ सर सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है ना Yes, sir. चेक करो जरा 144 को मल्टीप्लाई करो ना 18 से 18 for the 72 हाँ। 18 for the 72 2 carry 7 72 9 18 for 72 79 18 for 18 24 सही है क्या इसको गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अलग अलग देखिए ना ऊपर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन HCM and HCM इट इज कॉल्ड द गोल्डन फॉर्मूला एग्जाम्पल है फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स इजी सम्स फिर तो फैक्टर फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बताओ ना सर बोलो कैसे करेंगे इसको ये समय ना 27 upon 150 को शो करना है कि वो क्या है ठीक है ठीक है तो क्या करना है अभी 3 से डिवाइड तो कितना आएगा 9 अपॉन सॉरी 50 तो थोड़ा प्रैक्टिस करें छोटे बच्चों को बड़ा तो 50 आएगा अभी क्या करना है और शॉर्ट कर देते हैं क्या ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे 2 से कर दिया तो कितना हो जाएगा छोटे बच्चों 18 अपॉन 100 नीचे से 100 को हटाएंगे तो क्या ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट तो कितना आएगा 0 पॉइंट से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता है 15 into 2 किया तो कितना आता पिक्चर है साइंस का इसको साहूकार और किधर शिवाजी में भेजना कब वही भेजना करना है? पड़ेगा ना अभी तुम बताओ। ऐसे भी तो क्या करोगे डिवाइड करोगे ना 9 को 50 से डिवाइड ही करोगे समझ में आएगा तो कितना आएगा 0.18 इसके आगे कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो ये कौन सा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होता है इरेशनल समरी एंड की टेक है भाई बोलो तो क्या क्या पढ़ा है अभी बताओ एक बार बात करो उससे तो तेरे को बोलो और एक पीपीटी दे दिया नंबर किसी में पढ़ा दो था पीपीटी डिस्कस करना ठीक है क्या पढ़ा हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा रियल नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं हाँ सचमुच के नंबर्स क्या होते हैं सचमुच के नंबर ठीक है ना बेसिकली देखो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है नेचुरल नंबर्स का कौन सा होता है नेचुरल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाए तो वो क्या बनता है होल नंबर्स होल नंबर्स के बाद
प्लस माइनस आ जाए तो इंटीजर्स बन जाएगा, और सबको मिला के क्या बनता है, इंटीजर्स को आई से भी लिखते हैं और कभी कभी जेड से भी। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फंडामेंटल थ्योरम, फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ा। समझ में आया क्या कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हमें क्या है फैक्टराइजेशन में या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और क्या पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया क्या? ठीक है ना। एचसीएफ बेसिकली क्या है, डिवीजन मेथड। डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा किसके बीच में रहता है, जीरो और बी, मतलब जीरो और वो जो डिवाइजर के बीच में रहेगा, किसके बीच में रहेगा, डिवाइजर के बीच में रहेगा। ठीक है ना। और क्या है, गोल्डन फॉर्मूला क्या था, एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप के डेसिमल आते हैं। कितने टाइप के आते हैं, दो टाइप के आते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब एक होता है रिपीट होगा और एक होता है रिपीट नहीं होगा। रिपीटिंग में कौन सा आएगा, जैसे 0.3333 जाते जाएगा, 0.666 जाते जाएगा। बट जैसे 22/7 हो गया, अगर नंबर भी हो वो भी क्या है, रिपीटिंग है ना। बट वो रिपीट कहाँ होगा, एक उसके बाद होगा। समझ में आएगा, उसमें क्या है, बट वो भी रिपीटिंग ही है। नॉन नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, ये सब क्या है, रिपीटिंग। ये नॉन मतलब चलते जाएंगे। तो जो भी नंबर रिपीटिंग होते हैं क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जो भी नंबर्स रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, irrational होते हैं। समझ में आया क्या ये आपको? और कैसे अपलोड करें क्वेश्चन पेपर है ना, वो ग्रुप में क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा नहीं नहीं जाऊ दे सब है है। कैसे? हाँ दिखा, शायद कौन देख रहा क्या करना है, स्टार्ट करना है रिकॉर्ड। क्या हुआ है? रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग। हम्म, हम्म, क्या हुआ? रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। इंग्लिश में बता दो। इसका पेपर जो भेजा ना, रियल रिक्वेस्ट का भेजा। Please solve some questions on real numbers. Okay. एग्जाम क्या लगता है, कल डाले थे ना। रियल नंबर। Please check whether 9/75 is terminating or non-terminating. Check. Check whether 9/75 is terminating or non-terminating. अलहमदुलिल्लाह।
क्या होगा? Terminating. Nine by 75 terminating. Right. आता कुछ नहीं. ये इनको बोला. 9 by 75 बताओ ना कैसे लगेगा. Tell me the calculation fast. 0.21. 212. 3 into 3 na. 0.12. 25 to 3. So 3 upon 25 multiply by 4, right? So 12 upon 100. So what will be the answer? 0.12. Understood? सही है ना? I just want to show you one sum. If your number system is good, take this out. This is ABC. If this is 3 and if this is 4, so what will be the hypotenuse? 5. I'm not asking that. I'm asking BD. Anybody who can tell me how to find BD? Boys and girls, anybody who can tell me how to find BD? Wrong. 2.5 is wrong. BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. Sir, root 5. Root 5 is also wrong. Absolutely correct. Radhan. 3 ka square plus 4 ka square. What will be the hypotenuse? Hypotenuse will be 25. AC will be root of 25. 5. What will be root of 25? 5. Yeah. What is area of triangle ABC? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. बोलो. Half into Base base कौन सा height कौन सा? So half. BC What is the base. base? BC. 3. What is the height? 4. What will be the area? 6. No? What will be the area? 6. Now can I write area of triangle ABC as? Can I write area of triangle ABC as half AC, the hypotenuse as the base? And what will be the height now? For the same triangle, AC will be the base now. And what will be the height? BD. Yes or no? Yes, sir. Now this is 6. Half. Into इससे बात करा. Hindi. This is 5 and this is BD. Zin. 6 to the 12. 12 upon 5 is BD.
What is BD का value? बोलो, what is the value of BD? Tell me what is the value of BD? कर्नाटकातले हिंदीला आरबडी वाटत 2.4. Mute कर रहे हैं? बच्चों को mute कर. Mute करो बच्चों को. How many of you understood BD का value? समझ में आया क्या? 12.5. Yes, sir. If you have understood Yes. right, समझा. या चमका लिखो. एरिया से क्या एरिया से? एक ही ट्रायंगल का एरिया, सेम ट्रायंगल का यू कैन राइट हाफ बेस इनटू हाइट दोनों तरफ से. तो बेसिक हो जाएगा. ये जो किया ना वो थ्योरम यही है. एरिया को बेसिकली कुछ नहीं है थ्योरम वो दोनों को जो ट्रायंगल है ना उसको दोनों साइड से एक साइड हाइपोटेनस बेस लिया एक साइड नीचे वाला बेस लिया दोनों को कंपेयर कर दिया. समझ में आया क्या? तो वही है दोनों को कंपेयर किया तो इंग्लिश में बोल भाई. If this is 7, this is 24. Find BD now fast. 25 No, that hypotenuse will be 25. I don't want the hypotenuse, I want BD. How to find BD? BD is perpendicular AC. सर 5 है क्या? Technical का practice कराना. 7 square What is the answer? first take out the hypotenuse and after this solve this question. What is the hypotenuse? 25. Then find the VD. सर 5 है. 5. yes Wrong. 25. I am not asking hypotenuse. I am asking the length of BD. What is the length of BD? Wrong. शमशान भूमि जाना छोड़ दे फिर दिमाग चलाना. Wrong. Anybody from online? I am teaching real numbers. I am converting things into terminating decimals. Okay, वापस. See, I am repeating the sum. See, girls, see. How to find hypotenuse if it is right angle? What is AC का square? AC का square is AB का square plus BC का square. Tell me what is AC square? बोलो AB कितना है? 7 का square. What is BC? 24 का square. What will be AC square? 7 का square कितना होता है? And 24 का square? If I add, what is AC square? Then what is the AC? 5 What is root of 625? So this is 25. I am not asking you this. I am not asking you this. I am asking you BD. How to find BD? Anyone? What is the formula for area? What is the formula for area of triangle half ABC? into base into height Sir, Half into base. sir, BD is equal to 4.48. No, wrong. is it 84 No, it is also wrong. 6.72 Very good. What's your name? ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. What is your name? Rifa Salma. Fatima Huh? Rifa Fatima Rifa Fatima, you are from which school? ALG Crescent School sir Fantastic. Very good. Mashallah. You're right. thank you sir Now, what you have to do? You have to cancel half up. What is the value of AB? 7. What is the value of BC? 24. What is the value of AC? 25. And what is the value of BD? I don't know BD. So now how to find BD? Tell me. Decimal fraction mein real numbers 7 into 24 upon 25. Whenever in the denominator we have got 5, what do we multiply with? Bolo? What do we multiply with? Tell me. 4. 4. Multiply 4. Upper niche. So what will happen now? What will have in the denominator? 100. What will be? Multiplication कितना हो रहा है बोलो ना. What will be the answer? Decimal shift करो. Shift the decimal. What will be the answer?
This is real numbers. CBSE. How many of you understood? समझा ना? बोलो, tell me, समझा बोलो, समझा. समझा क्या? बोलो No. चिंता. All of you understood? Can I give one more number? Yes, sir. Yes. In the WhatsApp group, I have shared a question paper and the answer key also for real numbers and also the chemistry chapter. Which chapter we were doing? आज के डेट पे क्या हुई चैप्टर कराना? Today we'll be continuing with the chemistry chapter. But in the WhatsApp group, I have shared a question paper, competency-based question paper. Everything will come from that only in the board exam. Those who are from CBSE board, 50% will come from competency-based questions. So we have shared that questions in your WhatsApp group. Are everybody in the WhatsApp group? If you're not in the WhatsApp group, please Yes, sir. message WhatsApp me Yes, on this sir. number. Yes. If anybody want to get added, for 8 more days we'll be teaching free. So anybody wants to get added, please send a message on this number 9890826344. Winter vacation, Kurg. Kurg. C-double-R. Okay, can I give one more sum? Now you should not make mistake. Same triangle, ABC. This is 15. This is 20. From here, I am drawing an hypotenuse. I am asking you to find BD. First. सर 6 है. No. सर 6 है. बीडी Sir, इधर आएंगे. Sir, 12 नहीं, answer is 12. Answer 12 ना. AC is 25. AC is 25, but I want BD. Sir, 12.5. Wrong. Sir, BD is 12.5 equal to 12. 12. Sir, BD is 12. BD is 12. Yeah, 12 is right. Explain me correctly. After that, we will take out the area of triangle ABC by taking the hypotenuse base as BC. So how we find the area? 1/2 into BC into AB. Okay. And other time for another area, we will take this BD as height and AC as base. So here it will be AC into BD. Then 2 will get cancelled out. What is the length of BC? 20. What is the length of AB? 15. And what is the length of AC? 25. What is the, then we have to find BD. So if we find the BD, then we will take 25 in denominator. So it will be 20 into 15 upon 25. So we will cancel out it with 5. So it will get cancel out by 5 times, and 20 with 4 times. And again, if we cancel out 15 by 5, it will get cancel out 3 times. So length of BD will come 12. Understood? Because samjha liko samjha, right samjha, right chamka, right syntax. In the chat box, likh rahe. Today I will teach you. Huh? No. No or yes?
Yes. Still not understood? No, today I am teaching you one very important satta. Every day I will teach you one satta. What is the full form of satta? What aphorisms? बोलो. Tips और क्या? Tricks by what? Anis. Kutti. This is sattas. I am teaching a magic formula today. You will not find this formula anywhere, even in Google. ChatGPT को समझता है क्या formula? ऐसा डाल के देख. N integer n upon 2n plus 1. This is the magic formula today. लिखो जादू. बोलो क्या लिखने का? चैट बॉक्स में लिखो जादू. अगर मैंने n को 1 डाला, if I put n equal to 1, क्या आएगा बोलो? 1 integer 1 upon 2 into 1 plus 1. हमारे बोल तो भाग जाएंगे बच्चे. 4 upon 3. तो आंसर क्या आएगा? 3, 4 और 5. ये ट्रिपल से पाइथागोरस ट्रिपल. जरा इधर ना, ये सब इधर मेरा स्क्रीनशॉट डाल दो अच्छा हैंडराइटिंग में. तो 3, 5, 4 is a Pythagoras triplet. अच्छा हैंडराइटिंग का डाल. See, again I'll repeat. See, look at here. What is the magic formula? N integer, Priti. ऐसा आना चाहिए. N integer upon n upon 2n plus 1. स्क्रीनशॉट में लिखना पड़ेगा ऐसा. ये ऐसा. 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मिला के 5 का स्क्वायर. n को 2 डालो. If I put n equal to 2, what will get? बोलो सर क्या आएगा? अनीश सर. 2 integer 2 upon 2 into 2 plus 1. 2 integer 2 upon 5. Yes or no? हाँ तो क्या? 5 to the 10. 10 plus 2, 12 upon 5. So what will be the Pythagoras triplet? 5, 12 and 13. Just add 1 to it. If you check, 5 square plus 12 square will be how much? 13 square. Are you understanding? Boys and girls? Yes, Online. sir. This is a magic formula which is giving you a Pythagoras triplet. इसको भी नहीं आता. तो मालूम ही नहीं ना. वो चैट जीपीटी वही दे सकता है जो ऑलरेडी नेट पे है. So the magic formula is n integer n upon 2n plus 1. बोलो बच्चे लोग, what I should put here now? And if I put n equal to 3, what I'll get? 3 integer 3 upon, बोलो. So 3 integer 3 upon 7. क्या आएगा? 7. एक ऐड करना है ना. What is this? Triplets. Triplets भी गलत है. It is called triples. Pythagoras triples. Everyone know what is Pythagoras theorem? मालूम है ना Pythagoras theorem? Online students, are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Yes, See, there is a magic formula which is giving me odd triples. How does it work? See, it works like this. You make a column. You make a column like this. Draw a line like this. Okay. Now take the first number. What is the first number? 3. 3 or 4 later, what will be the answer? Loudly. 5. What is the next odd number? 5. If I take 5, then what I'll get here? 12. Then 13. 7 लिया तो. 24. सर आ जाओ, हो गया मेरा 7.
24. 25. 25. If I take 9, if I take 11, if I take 13, loudly. जादू बताओगे आप? देखो, ये 4 और 5 को ऐड करो, कितना था? 4 और 5 को ऐड करो ना, उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा? 9. आ रहा कि नहीं? ये 12 13 को ऐड करो, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ 25. रहा? 24 25 को ऐड करो, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता? बताओ तो बताओ, इधर क्या आएगा बताओ? 40 41 वेरी गुड. किसने बोला? जय माने ना? यस सर अरे जय माने ने बोला ना? हाँ सर हाँ. 40 और 41 ऐड करो ना, कितना था? 80 अच्छा 11 का होता है, 11 का 60 और 61 60 और 61 ऐड किया तो 121 है ना? 60. 60. अभी 13 का बोलो. कल चाय पे जरा पे जाना है, उसको भी सुना लेना. उन्होंने स्टेटस पे डाला था, देखा था क्या आपने? आपने देखा था क्या? तो मीटिंग सब मेरा दिया 84 और 84 और 85 को ऐड करो, कितना था? इसका आइडिया कैसा है? देखो अभी बता था, 3 का स्क्वायर कितना था? 3 का स्क्वायर कितना था? 3 का स्क्वायर 9. 9. थैंक्स. सेंड प्लीज सेंड. थैंक्स एंड प्लीज सेंड. 3 का स्क्वायर 9. 9 में से एक माइनस करो, 8. 8 अपॉन 2 कितना आ रहा? 4 और एक 5. 5 का स्क्वायर कितना था? 25. 25 में से एक माइनस करो, डिवाइड बाय 2. बात समझ में आ रहा क्या? 7 का स्क्वायर कितना? एक माइनस करो, 49. 49. 48 डिवाइड बाय 2. 9 का स्क्वायर कितना? एक माइनस करो, 81. डिवाइड बाय 2 करो. 11 का स्क्वायर एक 22. माइनस करो, डिवाइड बाय 2. 13 का स्क्वायर एक माइनस करो. तो ये और ट्रिपल्स का रूल है बच्चे लोग. क्या रूल है मालूम? पहला नंबर कभी भी 2n+1 आएगा. इंग्लिश फर्स्ट नंबर विल always be 2n+1. The next number will always be m square minus 1 upon 2, and third number m square plus 1 upon 2. Sir, I can understand. We'll explain again tomorrow, but this is a very important difference. One more thing, very important, Satta. If you see all the numbers, every Pythagoras triplet, ChatGPT में डाल. Every Pythagoras triplet will have a multiple of 3 and a multiple of 5. बोलो बच्चों लोग, और एक बार बोलो, क्या बोला मैं? Every Pythagoras triplet will have a multiple of 5 and a multiple of 3. Repeat. आगे वापस से बोलो सट्टा, क्या बोला? Every Pythagoras triplet will have a multiple of 3 and a multiple of 5. 5. Repeat. Every Pythagoras triplet will have a multiple of 3 and a multiple of 5. 5. Sometimes only one number. 60 is a multiple of 3 and 5. Every Pythagoras triplet will have a multiple of 3 and a multiple of 5. So ulta bola, ulta. If you don't have a multiple of 3 and 5, the 3 numbers will never be a Pythagoras triplet. This is called satta. Science factor. Understood? समझा लिखो, चमका लिखो, सिंटैक्स लिखो. This circuit did science also, but I don't know. This is payment. Understand? दारू चेक दारू
अनम्यूट केलंय ना? हो. Unmute आहे ना? ओके. Next time पाठवतो. Okay. Remember that. Okay. So good evening to all of you. As we have already started a chapter chemical reaction, and yesterday we have seen basically briefly we'll recapitulate whatever we have learned yesterday. So we know that what is meant by chemical reaction, and in our day-to-day life we come across many situations, many things which are actually what we are observing. We are observing the changes in its chemical property. So like just take the simple example. As we know that गर्मियों की season में क्या होता है? In the summer season, we get the like कैरी मिलता है like in the month of February. And after 2 months we get the ripe mango. So what happens over there? The chemical change is observed, and due to that chemical change the unripe mango becomes the ripe mango, and that is the chemical change. So it's become very essential to understand the chemical reaction. Why? Because in our day-to-day life we come across many situations. Just take the example of the famous example, that is the rusting of iron, and every year our country is spending a lot of money on this process. So it has to be eliminated or it has to be reduced. So what are the different what are the different ways by which we can prevent this rusting of iron? That is the major topic that we are going to see in this chapter, in today's lecture, that is corrosion. And different, we know that every metal actually corrodes. That means the degradation or the deterioration of the metals just due to the environmental factor, or just the like environmental factor, like effect of water, effect of moisture, effect of acid. How these chemicals affect the metallic object, this is called as a corrosion. The famous, out of metal also we have the different kind of metal, like copper. Corrosion of copper also takes place. Corrosion of silver also takes place, and corrosion of iron also takes place. But basically corrosion of iron, we know that most of the things are life are actually made up of what? Yes, किससे बना हुआ है? Most of the things. आयन सबसे ज्यादा यूज करते हो, या कॉपर यूज करते हो, या लाइक सिल्वर यूज करते हो? सबसे Iron. कॉमन, वेरी गुड, Iron. आयन, वेरी गुड, Iron. आयन यूज करते हो. So we have to see how the rusting, what is the actually chemical mechanism, what is actually chemical process behind that, how the chemical, how the iron, any iron object get rusted. Okay. And what are the different methods by which this corrosion, that means the rusting of iron, can be prevented, that we are going to see in today's class. Okay. So I'll ask you some few questions. What do you mean by chemical changes or chemical reaction? Anyone? Online student? Irreversible changes. It's a, like, how do you identify whether the chemical reaction has taken place or not? How did you come to know that yes, a chemical change has taken place or not? It is Yes, irreversible. very good. It's a change in color. That is the, okay, that is the basic criteria. That Change is in the, state. but what is the main aspect? What is the main criteria for the, how do you identify whether a change has taken place or not? properties. Reversible. Chemical property change होती है. Very good. Anything else? After this change, Born to stay. Very good. That is the process. That is the mechanism. Yes, what happened? Yes. Change in temperature. No, देखो, just listen carefully. Change in temperature, change in color, formation of precipitate, evolution of a gas, these are not the primary. These are all secondary point. Yes, it is. If you observe this kind of changes, what you can confirm, not confirm actually, you can say that a chemical reaction has taken place. अगर आपको क्या ऑब्जर्व होता है, like changing color, formation of precipitate, evolution of a gas, change in temperature, if these things get happen or observe, what you can say, a chemical reaction may have taken place but not confirm. How would you confirm it whether a chemical reaction has taken place or not? वो आप confirm कैसे करोगे? For that, anyone? By Yes. forming new substance. Very good. That for that the new substance must be formed.
the new substance must be formed, which have the entirely different chemical property as compared to the initial substance. Compared to what? Initial substance. Understood? या फ्लो में जा रहा है, जस्ट ऊपर ऊपर फ्लो में जा रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाओ. ओके, एक्चुअली 1 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म करना है ना, इतनी नहीं बेटी. चलो, so just see the definition for today's class. A process where substance undergo chemical changes to form entirely new substance with different property, that is the chemical reaction. Okay, so in your board exam there may be the question for 1 marks. Define chemical reaction. Define chemical reaction. So you should able to write the definition of the chemical reaction. Understood, all of you? Yes, online students. Yes, sir. Yes. Okay, and the next is what now, let's see a simple example I'll give you. Just see here, AB is one of the chemical substance, CD is the other chemical substance. Now AB is the first chemical substance, CD is the second chemical substance. They both react with each other to form what? To form like New substance. AC plus BD. AC plus BD. Now tell me, now what happens, like initially what are your reactant? There were 2 reactant, AB and CD. After the reaction, what is the product you got? AC and BD. Now if you observe, these are completely different from the reactant. That means a chemical reaction has taken place. Now we want to actually see what happens during chemical reaction. What happens during chemical reaction? Actually, what happens, हमें chemical reaction तो क्या, ये हमें this we have understood, but होता क्या है उसके अंदर chemical reaction में? So if you observe, ये जो AB के बीच में ना actually bond होता है यहाँ पे, this bond gets break down. CD के बीच में क्या होता है? Bond होता है. This bond get break down. So this bond get broken down. So जब AB के बीच का bond break होगा, it will form what? Separate A and B atom. CD के बीच का जब bond break होगा, it will form separate C and D. Now A will get combined with C to form AC. मतलब A और C के बीच में क्या होगा? पैचअप होगा. AB का ब्रेकअप होता है और CD का ब्रेकअप होता है, और AC का क्या होता है? पैचअप होता है, और फिर किसका पैचअप हो जाता है? BD का. सो अल्टीमेटली जब भी कहीं आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, जब कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट मीन्स bond breaking and bond formation goes on or takes place simultaneously. How it goes on? मतलब एक तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है तो दूसरी तरफ बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है. जैसे AB के बीच का क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ. CD के बीच का क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ. जैसे AB और CD का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तुरंत AC ने क्या किया? पैचअप किया, यानी कि बॉन्ड फॉर्म किया, और तुरंत किसने और बॉन्ड फॉर्म किया? BD ने. So normally what happen? Bond, इसीलिए आपको सेकेंड स्लाइड में यहाँ पे क्या लिखा है? If you observe, सेकेंड बॉक्स में bond changes. So chemical reaction, yes, it is also possible way. Yes, BC and AD can also form. So over there also what bond formation is taking place. So understood. So during the chemical reaction, what happens actually? Bond formation and bond. What happens? Bond formation or breaking of the bond. That means bond breaking and bond formation simultaneously. What is it by simultaneously? एक ही टाइम पे. साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे. समझा? हाँ समझा गद्दू? ओके, नेक्स्ट स्लाइड कैसा आएगा इसका? ओके, एवरीडे एग्जांपल्स देखो. एवरीडे एग्जांपल लाइक बर्निंग वुड. बर्निंग वुड केमिकल चेंज है या नहीं? कैसे बर्निंग वुड केमिकल चेंज? ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई बताएगा? यस, हाउ द बर्निंग वुड इज अ केमिकल चेंज? तुम बताओ. Burning wood is a chemical change. Justify this statement. How will you explain it? It's a chemical change.
कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ, तुम बताओ। टेम्परेचर। यस, बर्निंग वुड, लकड़ी जलाते हो, बाम्बू, बाम्बू जलाते हो, सो इट्स ए केमिकल चेंज। नहीं जलाते हो, फिर क्या जलाते हो? लकड़ी जलाते हो। ओके, ठीक है। कैसे, क्या समझ आता है बर्निंग वुड से केमिकल चेंज, कैसे बताओगे? हीट इज एक्चुअली वुड में क्या होता है, वुड में एक्चुअली कार्बन होता है और वो सेल्यूलस के फॉर्म में होता है। एक्चुअली सेल्यूलस मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बट जब उसको आप बर्न करते हो, तो बर्न, जब भी कोई चीज बर्न करते हो तो व्हाट यू न्यू, फॉर बर्निंग व्हाट इज रिक्वायरमेंट, क्या लगता है बर्निंग के लिए? हीट। ऑक्सीजन लगता है बर्निंग के लिए, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो फॉर बर्निंग पर्पस व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो दैट सेल्यूलोज इट गेट्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है एंड एस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, बट में केमिकल चेंज है। बट वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, एवरी केमिकल चेंज इज एसोसिएटेड विद व्हाट, केमिकल रिएक्शन। जहां कहीं केमिकल चेंज होता है, यहाँ पर मतलब वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। यस, रेस्ट तो रेस्टिंग आयन, डाइजेस्टिंग फूड, राइपनिंग फ्रूट आर ऑल केमिकल रिएक्शन। राइपनिंग फ्रूट का एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना। जैसे देखो, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते, मोस्टली 99% of the chemical changes are irreversible, but there is 1% again case that some chemical reactions are reversible, that you'll be going to study in class 11. Okay, now just see application as far as of today's lecture concern. What is the application of chemical reactions in daily life? If you see the application of chemical reactions in daily life, where do you find the application? Application means what? Yes, क्या होता है application ऑनलाइन बच्चों? अप्लाइंग। Apply means what? Actually, in shorter way, what you can say? Very good. Use of chemical reaction in daily life. Okay. So where do we use the chemical reaction? बचाओ. Cooking is one of the क्या होता है? कौन justify करेगा cooking में chemical reaction कैसे use करते हो? Heat is हाँ? heat causes to Read करो. क्या लिखा है मैंने वहाँ पे, read करो. हाँ. जैसे कि सर What happened? राइस जो बनने के पहले अलग होता है और बनने के बाद अलग होता है। Yes. That is और right. सर रोटी ऑल्सो। Yes. Okay. I'll read it for you. Heat causes chemical changes in food molecules. Heat causes chemical changes in food molecules, making them easier to digest and often tastier. Proteins denature, sugar caramelize, and starch gelatinize. Means what? जब भी आप केमिकल क्या जब भी आप केमिकल सब्सटेंस, आप जब भी कोई भी सर, आप जब भी फूड को हीट करते हो, खाना बनाते समय व्हाट यू डू, यू हीट द, when you cook the food actually, your chemical changes happen within the food. And like for example, let's take a simple example I'll take. कच्चा घास, कच्चा मेथी, कच्ची पालक क्यों नहीं खा सकते हो? Because it is not easy to digest, because they contain cellulose, and cellulose is a complex carbohydrate. It is a complex carbohydrate. And what you have studied in biology, for making, whenever you want to make the food digestion, that complex substance must be converted into simpler form. And that complex carbohydrate, that is cellulose, most of the plant-based material, they contain complex carbohydrate. This complex carbohydrate must get converted into what? It must get converted into simple carbohydrate. And for that purpose, what you need to do, you need to heat it. When you heat, this complex get broken down and it get converted into what? Simpler form.
Just as like, for example, there are some, like this person is there. Suppose this is one banda, this is the other banda, this is the तीसरा banda, and this is the fourth banda. इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है. अगर इनकी दोस्ती को इफ आई वांट टू, इनकी दोस्ती को मुझे तोड़नी है, तो व्हाट आई नीड टू डू? झंडे लगा, इनके बीच में झगड़ा लगाना पड़ेगा. झगड़े के आग लगाऊंगा, बोलते ना आग लगा दो, आग लगा दो, फिर आग लगा दो, दोस्ती टूट जाएगी. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कुछ ऐसे ही होते हैं. कॉम्प्लेक्स जस्ट सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कुछ ऐसे ही होते हैं. लाइक दिस इज योर वन मोनोमर, दिस इज योर अदर मोनोमर, उनके बीच में बॉन्ड होता है. ऐसे बहुत सारे उनके बीच में बॉन्ड होते हैं. ये बॉन्ड को ब्रेक करना होता है एक्चुअली. चलो चलो क्यों? सर अनिश यस, सर, हेलो मैम. अनिश चौधरी सर. हाँ सर, बोलिए ना. ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश. यस सर, ओके ओके. हेलो मैम. Okay, just see here, all of you, pay attention now. So, what we are seeing the applications of chemical reaction in daily life. The first application that we have seen, that is in the cooking. Actually, there are lot many examples or lot many application, but we are just going to give emphasis on the application as per our syllabus. As per our syllabus. Okay. So, cooking. Now, the second application is what? The second application is respiration. What is that? Respiration. Now, how many of you know what is the difference between respiration and breathing? Yes. Exchange of gases between environment and water. Very good. Breathing means breathing is just online student. Can I have the single point differentiation between respiration and breathing? Anyone? Respiration is the breakdown of food by the use of oxygen, and breathing is the taking in of oxygen and releasing of CO2. Very good. Now, whatever you said, what's your name? Safia. Okay, Safia, whatever you said, it's absolutely correct, no doubt. But can you tell me whatever you described, can you just give me the answer for the same in just single word? What is the basic thing, like by using the single word? Whatever you said, it's absolutely correct. But you have to use the single word for that. You know, actually, respiration is a chemical process. By chemical, respiration is a chemical process, and breathing is what? Breathing is a physical process. Respiration is chemical process, whereas breathing is what? Physical process, right? Because in respiration, what happens? What is the equation for respiration? Yes, respiration C6H12O6. This is your what? Glucose. It combines with what? Oxygen. And then what it forms? Anyone? CO2, H2O plus ATP. ATP molecules. ATP molecule. This ATP molecule gives you the energy. It gives you the energy. What is the full form of ATP? Adenosine Diphosphate. That is called as the energy currency of the cell. This during the respiration process, listen. During the respiration process, your glucose molecule, it gets react with oxygen and it forms, what does it releases? It releases carbon dioxide and water molecules in the form and ATP, and that's why because of the respiration you get energy. So just tell me, if you just keep on eating food, because from food what you are going to get? From food, not energy. If you eat food, you will get a glucose. But for that glucose, what is the essential condition? Suppose if I'll not give you the oxygen and I'm giving you a lot of food, but I'm not giving you the oxygen, will you able to survive? No, because energy is not produced. At that time, energy will not produce, because if you see the reaction, glucose must have to combine with oxygen. So oxygen becomes essential. Okay, and if I give you just oxygen gas, not food, then also you'll be not able to survive. Okay, because so in respiration is a process. It's a chemical process actually. It's a what? Chemical process. So we have seen cooking. We have seen respiration, cleaning. Now come to cleaning.
the action of soap and detergent, what happens? Why are you laughing? What is the action? Action. Okay, so that we will be seeing in the fourth chapter. You have the chapter called as the carbon compound chapter. In that chapter, we'll be seeing about the cleaning in detail. And the other example is photosynthesis. It is exactly the opposite of respiration. Photosynthesis. How many of you know the equation for photosynthesis? Online student? Sophia? Yes, sir. Only. Yes, Sophia? Yes, sir. What is the C6 equation for photosynthesis? Chemical equation for photosynthesis? C6 I'm asking for Carbon photosynthesis. dioxide and water. chloro Yes, what happened? CO2 plus 2 chlorophyll Okay, you tell me. What is the equation of photosynthesis? That is basic. It's the basic question you have already learned in class 7 also. 6 CO2 plus 2 gives I'm not asking the balance. Just tell me the simple. I'm not asking the balance equation. CO2 plus H2O. Water. water, sunlight. What it forms? sunlight CO2 plus water. And sunlight. It forms what? In presence of the Right, very good. In and presence of Yes, sunlight yes. and chlorophyll. In presence of and sunlight and chlorophyll. chlorophyll. Yes. What it forms? Glucose. Glucose. That is C6H12O6. Plus what it releases? Oxygen. Oxygen. It's a photosynthesis. Plants make their food by the process called as the photosynthesis. So food means what? Food in the sense glucose. So it's a photosynthesis. In case of respiration, it's opposite. Okay. And what it releases? Which gas it releases? O2. So again, if you observe, even the in the plants also the chemical reaction takes place. And this is the importance of chemical reaction. Where do we find the chemical reaction? Understood, everyone? Online students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, O glucose sir. and oxygen glucose. Yes. Okay, just let's see here. Yeah, no, cleaning we'll be learning in the fourth chapter. Carbon and carbon compound. Okay. So as we all know that our today's main point that we have to discuss is what? Corrosion. So actually now we will see what is actually, and this is one of the important application of what, or you can say in corrosion also chemical reaction takes place. Now see, how many of you are familiar with the word corrosion? Yes. How many of you are familiar with the word corrosion? What do you mean by corrosion? Which No. corrode easily. No. If The some, I'm not asking you the something like it's just tell me your natural Sir, rusting observation. something. Yes. Online someone is saying, just wait. Yes. Rusting something, sir. example, moisturizer. No, actually. Sir, Yes. the process Be in which natural. I'm not asking anything that from your book. Don't give me the like bookish definition. I'm just asking what do you know about corrosion? sir, the process in which the metals are eaten up by the action of moisture on their Very good. surface. See, now you are right actually. It's a process where the metal get deteriorate. Metal get deteriorate means what? Metals are eaten up. Eaten up means whatever the quality of the metal is there, that quality over the period of time or gradually that quality gets deteriorate. Quality they get deteriorate means what? Deteriorate quality it get complete. Okay. So corrosion is the gradual destruction of metal. It is the gradual destruction of metal. Okay. That gradual means what? It's a slow process. Like as you observe, most of the iron articles. Is it like that today you have brought the new iron article and tomorrow it gets corroded or tomorrow it gets rusted? Is this happen? No. It takes some time. It takes some time. That means corrosion is a gradual process. So remember, it's a gradual process. That means it's a slow process. Okay. So it's a gradual destruction of metals through chemical reactions with the surrounding environment. Now, what I mean to say surrounding environment? Surrounding environment. How that destruction is going to take place? Yes, Moisture. surrounding environment means
that destruction is going to take place with the, like, suppose in the surrounding, it may be moisture, that means water, it may be oxygen gas, or it may be the not salt Acid. actually. Acid, very good. It may be the acid. So Acid. the effect of acid, effect of moisture, effect of oxygen on the metal, it gets what? Corrodes the metal. And this process is called as the corrosion. Understood, all of you? Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Any doubt you can ask me in between. If you have any natural question, any curious question, you can ask me. You are free to ask. Yes, sir. No, it's a different. Yes. Salt is a form of acid. Okay. Yes, tell me, any doubt? No, sir. Sir, what Okay. is mean by acid rain? What is meant by acid rain? Okay, I'll explain you what is meant by acid rain. Normally, what happens, like most of your automobiles, they release SO2 gas, nitrous NO2 gas, okay, along with the carbon dioxide gas. Obviously, we know that it's very common that automobiles release CO2 gas, right? Along with the carbon dioxide gas, they also releases SO2 gas. They also releases nitrogen dioxide gas. These gases, it gets accumulate in the atmosphere, okay, and now when the naturally rain happens, this rain water get mixed up by these gases. This rainwater get mixed up by these gases. Now what we know, in the rain what is there? Water is there. Now SO2 gas plus water, like SO2 from where? It has like from where we have got the SO2? From the automobiles. From the automobile. This SO2 gas, it gets react with what? H2O. H2O from where? Rainwater. So SO2, it react with H2O. What it form? It forms sulfuric acid. It forms sulfuric acid. So your rainwater becomes acidic in nature. That means what is the sulfuric? NO2 gas, it gets react with water, it becomes nitric acid. So again, in the rainwater, what is there? There is the sulfuric acid, there is the nitric acid, and the accumulation of sulfuric acid and nitric acid within the rainwater is called as the acid rain. And when this rainwater falls on the earth, it actually affect the living ecosystem. Living ecosystem means हमें भी affect करेगा. Yes, obviously. हमें भी अफेक्ट करेगा इवन एक्वेटिक लाइफ और जितने भी आपके लाइक इवन जो आपके पॉन्ड्स वगैरह में जो फिशेस वगैरह होते दे आल्सो गेट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस. ओके, so ultimately we are responsible for acid rain. We human beings are responsible. How? Automobiles, who are using? We are using automobiles. Obviously we should be concerned about it. Okay, Hindu. Okay. Okay, so let's talk about it. So it's a natural process that transfers refined metals back into their more chemically stable form. And the most recognizable example is the rusting of iron, which is highlighted over here. Now I'll tell you actually, corrosion of silver also takes place. Corrosion of copper also takes place. And these are the metals. These are what? Metals. Iron also takes place. And you know one more very famous example, aluminium also. But you know, when the हाँ नहीं गोल्ड करोड नहीं होता है. देखो सबसे जब when silver करोड होता है ना, जब when silver get करोड, first try to understand the difference between the word corrosion and rusting. Yes. Just see here, corrosion is a common word. It's a common word. Just like in English you have the common noun and proper noun. For example, I'll say boy. Boy is what? Boy is the common word. Boy is a common. But if I take the name Pratik, Shivansh, Atul, okay, so these are the proper noun. I'm specifically talking about Pratik. I'm specifically talking about Atul. So these are more specific. That means a proper noun. So corrosion is a common word which is used for every metal, which is used for. But when the corrosion of iron takes place, it is called as the rusting. It is called as what? Rusting. When the corrosion of iron takes place, it is called as rusting. That means rusting is the word which is specifically used for which metal?
Iron corrosion. Corrosion of iron. Okay. Understood? Now we'll start with iron. What is the formula of iron? Fe. Very good. What is the chemical process we are saying over there? So every iron object, they are made up of what? They are composed of what? Fe. This Fe, not carbon. Fe. This Fe, it reacts with oxygen. Now from where I am getting oxygen? Very good. Environment. From the environment I am getting oxygen. That metallic object, when it comes in contact with oxygen, what is formed? What does it form? It forms Fe2O3. This Fe2O3 is called as the ferric oxide. What it is called? It is called as the ferric oxide, or you may call it iron oxide also. You may call it as the iron oxide. You may call it as the ferric oxide. Now remember, initially you have what? Iron. Fe means what? Iron. So initially you have the iron, and after the chemical reaction, what you have got? You have got the Fe2O3. That is the ferric oxide. So is the chemical property change or not? Yes. पहले क्या था? Fe. अब क्या बना? Fe2O3. Are Fe and Fe2O3 same or different? They are different. Very good. They are different. So chemical reaction has been taken place. Okay. Now remember, there was the question which has been asked in the SPI exam also, in the board exam also, and even in the NDA examination also. SPI, NDA, and board examination. This question was actually asked in the. What was the question? The question was that, first of all, this Fe2O3 is also called as the rust. It is also called as the rust. So first they will ask you what is the formula of rust. What is the formula of rust? So actually the formula of rust is Fe2O3 dot XH2O. XH2O means what? With the molecules of water. With some molecules of water. With some molecules. So that's why I have written X. Not specific how many molecules of water. With X molecule of water. That is, this is the formula of rust that has been asked in the board exam question. Okay. Now, other question in the SPI exam was that what is the color of Fe2O3? Anyone? Very good. The color is reddish brown, or you can say Sir, brownish red. reddish brown. Reddish brown or reddish brown. Yes. This is the second question. The third question actually. The third question almost. The third question. Remember, very important. The question was that what is the oxidation state? What is the oxidation state of Fe? Now, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं. What is the oxidation state of Fe? Oxidation state? No. It's Sir, English, actually English, sir, English. okay. Oxidation state of Fe means what? Normally, you can say like just see observe the formula. Can you just imagine how the Fe2O3 has been formed? The formation of Fe2O3. Just see here. Fe is there, that means iron. Oxygen is there. What is the valency of iron? The valency of iron is how much? The valency of iron is 3, and the valency of oxygen is what? 2. How they get formed? It gets formed by the cross multiplication. You know the formation of chemical formulas. So it form what? After cross multiplication, you will get Fe2O3. What do you get? Fe2O3. So now remember, this is the oxidation state of iron. What is the oxidation state of iron? Actually, your valency is the oxidation state. You will be understanding more about the oxidation state when you go in class 11. But as of now, what you can remember, whatever the valency of the metal is there, that is the oxidation state of the metal. So what is the valency of the iron over here? 3. So what is the oxidation state of iron? 3. Absolutely, right? Understood? Any doubt? This was the question asked in the NDA examination also. Okay. They will ask you the question, what is the oxidation state of the iron in the formula of rust? So iron atomic number is what? What do you know? Formula. I have taught you this trick. What is the trick? How to remember the atomic number? I have taught you this trick. What is that trick? Sachin Tendulkar वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा. This is the actually trick. This is the trick to remember the atomic number of element. Now scandium.
is what? 21, right? Titanium is how much? 22. Vanadium is how much? 23. Chromium is how much? 24. Magnesium is how much? 25. Iron is what? 26. So what is the atomic number of iron? 26. What is that? 26. And this is the trick you can use to remember the atomic numbers. Okay. सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा. ओके चलो. Okay, so I was talking about what? Just see here. We are talking about iron. So what you have to remember? Iron. What is the reaction of corrosion? Rusting of iron. Fe plus O2. It gives you what? Fe2O3 dot XH2O. Fe2O3 dot XH2. It is called what? Online students. क्या कहते हैं उसे? What it is called? Online बच्चों. Ferric oxide. Ferric oxide. Very good. And what is the common name for that? Rust. Rust. What is the oxidation state of Fe? Fe2. Oxidation. I am asking oxidation state. What is the oxidation state of Fe? Yes. Fe2O3. No, I'm not asking the formula. I'm asking the just oxidation state of Fe. 3. 3. Very good. What is the formula of now? What is the color of ferric oxide? Reddish brown. Reddish brown. Reddish brown. Exactly. Exactly. Good. Very good. Okay. 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 So we have seen, just see here. We have seen this equation actually. Okay. So just see here. Now I'll talk about something in detail about, like, these are also important for your exam point of view. Like these were the question asked in again SPI examination and ND examination. Let's talk about the silver. First of all, silver get rust, silver get corroded, not actually rust, because rust is the specific word for what? Iron. Very good. Iron. Silver get corroded when it comes in contact with what? Not Sulfur. oxygen actually. Sulfur. And not water also. Sulfur. No, online someone saying correct. Online student, yes. Sulfur. It forms the silver sulfide. And what is the color of silver sulfide? Black. Black. Exactly. Black. What is the color? Black in color. Remember, what is the color? Black color. Black. Okay. Now tell me about copper. Copper, what is the formula of copper? Cu. Copper, when it, copper, it get corrode when it comes in contact with what? Carbon. Carbon. Copper hydroxide. Copper hydroxide. Okay. And what is the color it is for? Green. Very good. And what is the specific word for copper? It forms green color. Like a ferric oxide is brownish color, na? So when copper gets corroded, it forms greenish color. If you go in Delhi, we have the one tower. I am actually not remembering the name of that tower. It's actually become. So if you observe that, many of the copper articles, it becomes greenish in color. Why? Because it gets corroded. Statue of Liberty is also made up of copper. Statue of Liberty is also made up of Copper. So yes, it is very good. corroded. Where is the Statue of Liberty? So Paris. Statue of Liberty in Gujarat. Are? Huh? Statue of Liberty. Are? America. London. Statue of Unity is in Gujarat. In Gujarat, we have the Statue of Unity. Okay. Sir, it looks greenish blue because of corrosion. Very good. It looks greenish blue because of the corrosion. And for copper, what is the specific word? For copper, we have the specific word as tarnishing. What is that? Tarnishing. Just as like rusting is for what? Iron. For copper is what? Tarnishing. Okay. Now see. बट उसके ऊपर हाँ, अगर उसको ओपन रखा तो किसके कांटेक्ट में आया वो H2O या ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया, then only, because that is insulated, na? That is insulated, so it will not get
corrode. Okay. Now just see here. What is the slide? Why does corrosion happen? Why does corrosion happen? Okay. So what is the reason? Just see what is the first reason. Just observe here. Observe here. Environmental factors. Environmental factor. Very good. Exposure to moisture, as we have discussed already. These things we have already discussed. So if you don't know, you have to read it again and write this 10 times. So you will be able to recall. Okay. Now you have to write this how many times? 10 times. Okay. You have to write this 10 times. Okay. So Yes. exposure to moisture, oxygen, acid, and salt significantly accelerate the corrosion process. Okay. Coastal area experience faster corrosion due to salt in the air. Remember, very important. It is not this statement, even it is not given in your books also. It is not given in the even in the NCRT, even in the state book code. But this on based on this, the question is asked in the India examination. So you have to remember. Very important actually this just see this slide. Coastal area experience faster corrosion due to salt in the air. The question may be that why coastal area get faster corrosion as compared to the which area? Normal this area. Okay. So why in the coastal area we have presence of salt in the air? Salt in the form of acid. So because of that, what corrosion happens faster in the coastal area? Second is what? Electrochemical process. Okay. So corrosion involves the transfer of electron between metal atom and the environment, creating tiny electrical current that drive the reaction forward. So actually what just see here, this reaction we have written Fe plus oxygen. Actually I have not written the balanced chemical equation. I will simply react the simple equation. Okay. So this reaction Fe plus O2, it gives you the Fe2O3 dot XH2O. Dot XH2O. This is H2O. Okay. So what happens during this? There is the bond formation between Fe and oxygen. Obviously, there is a chemical bond formation. What is there? Chemical bond formation. Chemical bond formation between Fe and oxygen. And that's why what we get? We get Fe2O3. Fe2O3. And during chemical bond formation, what happens? Transfer of electrons. What happens? Transfer of electrons. Transfer of electrons. Second, widespread damage. Corrosion causes severe damage to infrastructure, including bridges. देखो, every year, every year means often or regularly, we always government personnel what they do, the person from the government office what they do, they keep on checking the what they keep like checks the bridges also, because if in the manufacturing of the in the construction of the bridge we use what, in the construction of bridge we use iron. So if that iron get corrodes, bridge may get collapsed, and that may cause severe damage to the infrastructure, human life. Okay. So because this is the reason why we always like government person check the whether that bridge in that like whether whatever the iron articles are there in that construction, whether it is proper or not. Okay. In the proper maintenance, properly maintained or not. Okay. So the great damage to infrastructure including bridges, vehicles, ships, buildings, and underground pipelines. सीमेंट को कुछ नहीं होता है, मतलब कौन से सीमेंट को? होते होते जाती है तो थिकनेस आधी हो जाती है ना. Yes, thickness. Because iron, इसलिए तो कहा ना, what is there? Iron is there ना? सीमेंट थोड़ी करोड़ होगा. इसीलिए तो स्टोन्स कहाँ पे रखे हैं आपके? आयरन से आर्टिकल्स कहाँ पे होते हैं? आयरन के कंस्ट्रक्शन पिलर्स कहाँ पे होते हैं? विंडो अंदर. सीमेंट के अंदर होता है ना. सीमेंट थोड़ी करोड़ होने वाला जल्दी. सीमेंट पानी अब्सॉर्ब करता है, बट उसकी कंस्ट्रक्शन वैसे की जाती है, कितनी लेयर,
लेयर कभी देखा है लाइक इसकी पीछे केमिस्ट्री एक्चुअली केमिकल टेक्नोलॉजी पॉली कैसे कितने लेयर्स फॉर्म की जाती है मटेरियल्स की, ये रिसर्च आर्टिकल एक्चुअली काफी इसके ऊपर। ओके जस्ट हियर नाउ इफेक्ट ऑफ corrosion. What is the effect of corrosion? स्ट्रक्चर एज ए तुम्हारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, Bridge. किससे बना हुआ है, लोखंड आयरन ओके स्ट्रक्चरल वीकनेस, so weakness in the structure, corroded metal loses strength and become brittle. Brittle means what? Convert into two pieces, potentially leading to catastrophic failure. Catastrophic failure means very bad failure in bridges, building, machinery. This poses serious safety hazard to people. As I discussed, economic loss. Can anybody explain me, justify this statement? How does the economic loss due to corrosion, how it leads to economic loss? Very good. Yes. Yes, collapse. So industries and governments spend billions of pounds. Pounds means what? Pounds means what? Billions of paisa, billions of money, billions of rupees. Annually repairing or replacing corroded structure and equipments. Studies, very important. Just see here. Research and studies shows that or estimates global corrosion cost exceed 3% of the world GDP. That means total of what is GDP? Gross domestic product. Just see here, you are not learning this chapter from your exam point of view. You are learning this as a real life example, application based. That is the application of chemical reaction. Actually, whatever we are learning, not just for scoring the exam in the marks. Because ultimately, when you are going to face the interview in SPI after your written examination of SPI and after your NDA also, you are going to face what? Interviews. And during interview, they will ask you the question, thought-provoking question. And for thought-provoking question, this is very important. Like, why do we have learned the chemical reaction? Or what is the output you have got after learning this chapter? What is the output? So remember, studies estimate global corrosion cost exceed 3% of the total GDP. That means out of the more than 3% you are spending on what? That much money we are spending on what? For not infrastructure, for like for maintaining. Okay. Environmental impact. Damaged infrastructure require replacement, generating waste, consuming resources. Corrosion of pipelines and tanks can also causes chemical leaks, polluting soil and water. Right. So obviously, when like let's suppose when the bridge get corroded, what do you need to do? Replacement. And for replacement, what do you do? Sometime rasta kya that particular bridge get blocked. So hamara like we have to change the path. We have to change the path. Traffic increase ho jati because ultimately now we have got single path only. Okay. So this is a very common things that we now as we have talking corrosion. Now how to prevent corrosion? The problem. We know problem. But what is the requirement? We should not talk about the problem. We should give more emphasis on the solution of the problem. What is the solution? So what is the solution? How to prevent corrosion? That is the solution. This is your solution. Painting and coating. Painting and coating. You observe your grills of the window. If you observe the grills of the windows and doors, we always paint that grills of the windows and doors by what? Paint it na? Paint karte hai na? For what? To prevent corrosion. Because while painting, your iron article don't get directly, it doesn't get directly come in contact of what? Oxygen. And so this is prevent. So that painting, it act as a barrier. It act as a barrier for what? Oxygen and all, water molecule and all. Okay. Next is what? Next. Yes. Online student. Galvanization. Galvanization. What is galvanization? Coating iron or steel with a layer of zinc. With a layer of what? Zinc. Zinc. That means whatever your iron articles are there,
what that iron articles must be electroplated or it must be coated with the zinc. Which metal? Zinc metal. Remember, this is the question asked in the exam. What was the question? In galvanization process, which metal is used? Zinc. In galvanization process, which metal is used? Zinc. Zinc. What is the formula of zinc? Zn. What is the formula? Zn. Zn. Okay. Third Yes. is what? Resisting alloys. Actually, you can use the alloy, like stainless steel. You know what is stainless steel? Iron. Iron. When you mix some carbon or chromium and nickel, like when iron, it get mixed with carbon, it get mixed with chromium. What? Chromium plus nickel. This all together it forms an alloy. And what is the name of that alloy? Name of that alloy is stainless steel. What is that? Stainless steel. Stainless. So stainless steel is an alloy of what? This is again question. Again, this was the question. These are all the PYQ question actually. We have just selected the question and the topic we have framed from the actually PYQ question. Okay. So stainless steel. Board exam question. Stainless steel is an alloy of what? It's an alloy of iron with chromium and chromium and Carbon nickel. also. Marble? Carbon also. Carbon also. Yes, carbon. Okay. Good. Carbon. Okay. So stainless steel. And why do we actually mix chromium, nickel with iron? To increase its efficiency. To increase its efficiency. Efficiency towards what? Towards corrosion. Because if you directly take only iron, it will get corroded very fast. But when you mix chromium and nickel, the life of the iron article increases. The life of the iron article increases, or it gets corroded very slowly, or not at all, you can say. Okay, to resist corrosion, just see that. To resist corrosion, then cathodic protection. Cathodic protection. Are you able to? Cathodic protection. Attaching a more reactive metal like magnesium or zinc that corrode instead of the protected metal commonly used for pipeline system. Now you know that for electrolysis process. In the electrolysis, what do you all of your family? There's two words. Which words? Anode and cathode. What is anode and cathode? Just recall this part. Recall this experiment. What? Anode positive. Anode is positive and cathode is Negative. Negative. okay. So this is also one. This is also one of the way by which you can actually prevent the corrosion. Okay. Yes. Let's see real world example. Just see for you some interesting pictures are there. Let's see. Yes. Corrosion. Such a huge. What is the bridge? Name of the bridge. What is this? Name. Summary. Now our lecture actually got completed. Now let's come. Just stay down. Summarize the lecture. What we have learned in today's session. Summarize. Just see why understanding corrosion matters. Why we need to understand corrosion, and what corrosion is a chemical reaction. It's a so it has been associated with chemistry. Now why we need to study corrosion? Because once you have very good, it's a real life problem, and we should know what that means. Them. Solution. How to Solution. prevent. Okay. So as he said, it's a real life problem. That means it's a serious problem. Then how to prevent that means knowledge is protection. And then obviously, if once you understand the corrosion, so obviously why that corrosion happens, what is the reason behind that, you will be start acting in that particular direction. That means resource conservation. Resource conservation. Obviously, what type of resources? Your money will be saved. You what do you can save? Human labor. Okay. And then finally,
It's all goes with chemistry. For that you need to understand what? Chemistry. If you cannot understand chemistry, you cannot understand corrosion. So this is the application of the subject also. Where is the subject actually? Chemistry in action. Very important, actually very informative slide it was. Chemistry in action. Chemistry explains everyday phenomena. Just see here. Chemistry explain everyday phenomena and provide solution to real world problem. Real world problem. Lot of many researches are still going on this. Even if you talk about batteries also, there are many researches going on battery. So this session was not only from exam point of view. This session was also to provoke your mind, to change your mindset. Okay, to chemistry. Any doubt to anyone? Online student? Anything that you don't understand? No. Safia, Sir. have you got all the points? Yes, sir. Yes, sir. Anyone? Any doubt? No. No, sir. Okay, how was the lecture? Good. Nice. Nice, sir. Okay. Chalo. So we'll stop here today. Tomorrow we'll continue again. Chalo, goodbye. sir. Good night. Good All of night. you, bye. Good night. Take Good care. night, sir. Bye. Good night. Thank you, sir. Bye. Good night, sir. Bye. Bye. Thank Have a you. good Yes, what happened? I don't join yesterday, so please repeat. Hello.